some bony structures are present in the dermal region, not epidermal region, dermal region, which is called as osteoderm. चलिए क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स की हम बात कर रहे थे, तो हमारे इस तरह से अगेन ये भी कंटिन्यूअस स्केल्स है और इसमें डर्मल एलिमेंट्स भी इनसाइड होते हैं. इट विल टॉक इट नाउ लेटर. पहले हम क्रोकोडाइल्स की बात करते हैं. स्केल्स होते कैसे हैं? लेटरल पे भी होते हैं, वेंट्रल पे भी होते हैं, टेल पे भी होते हैं और एक पिट लाइक डिप्रेशन होता है. ईच वन हैज अ पिट लाइक डिप्रेशन जहां पे एक स्मॉल सेंसरी कैप्सूल इज प्रेजेंट. ओके, छोटा सा कैप्सूल जो दे आर एबल टू सेंस एवरीथिंग. इसमें एक्टाइसिस नहीं होती. रिमेंबर, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स डोंट गो एक्टाइसिस और शेडिंग. हियर व्हाट हैपेंस इज जस्ट पैचेस ऑफ फ्यू स्केल्स विल स्लाउट ऑफ. जिनको जो बहुत बड़ी स्किन जैसी नहीं निकलेगी, तो हल्के से पैचेस निकल जाएंगे. ठीक है बेटा. तो डर्मल स्केल्स में अगर हम बात करें तो सर्टेन लिजर्ड्स हैव दीस ऑस्टियोडर्म. ओके, एंड देन यू हैव व्हाट आर टर्म्ड एज gastralia. This is a sort of called as ventral abdominal region में dermal ribs. These are dermal ribs which are present in ventral abdominal region. Okay, they are dermal scales which are now present in the form of rib. But please remember, they are not true ribs. True ribs नहीं है. जो हमारे ribs हैं या बर्ड्स में नजर आते हैं स्टर्नम एंड एब्डोमिनल रीजन में, वो नहीं है ये. ठीक है बेटा. रिब्स के साथ आप इसको, क्योंकि इनके अनसिनेट प्रोसेस वो सब नहीं है इसमें. दे आर जस्ट गैस्ट्रेलिया व्हिच इज द पार्ट ऑफ अ डर्मल रीजन एंड दिस इज वेंट्रल एब्डोमिनल रीजन में दीस आर कॉल्ड एज डर्मल रिब्स. ठीक है. ठीक है बच्चे. यस मैम. अब मैंने आपको बताया कि देयर आर नो ग्लैंड्स, not many glands are present, okay, except in few lizards we see, and in turtles. In lizards we see what are termed as femoral glands. Femoral glands क्या होते हैं? They are actually present in the male. So इसको मैं बड़ा करती हूँ. देखिए आप ये देखिए, on the underside of the thigh of male you can see these. Okay, these are called as femoral glands. Femoral glands. ये दिख रहा है ना? इसी की पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये पिक्चर दिख रही है ना, ये वाली पिक्चर दिख रही है. इसी को आप इससे कंपेयर करिए बेटा, को इससे कंपेयर करिए. ठीक है. ठीक है बेटा. ये अंडर साइड ऑफ द लिजर्ड यू कैन सी दिस femoral glands. femoral. और ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एक येलोइश सेक्रीशन सी आती है और वो येलोइश सेक्रीशन हार्डन हो जाती है. सो द मेल lizard is able to clasp the female lizard. ठीक है. helps in copulation. ओके, राइट. देखिए इस तरह से दिखते हैं ये ग्लैंड. इस तरह से ओपन करते हैं. These are the glands which will open to the outside. They will release yellow secretion and that will harden and help it to clasp. Even some snakes like Thamnophis gland, and they have a gland in the cloacal region. So snake like Thamnophis also has, okay, in cloaca a milky fluid comes out and it's very nauseating. So that is not for breeding, but that is more for defense. Up turtle में musk glands are generally present. Where are the musk glands present generally? They are present along the junction of plastron and carapace. तो ये अगर आप ये देखिए, ये नीचे के नजर आ रहे हैं, ये है plastron और ऊपर क्या carapace. इनके junction पे ये glands are present, and even in the jaws. Okay, beneath the lower jaw. So they beneath the lower jaw and at the junction of it, there may be these are present. Okay, so ये musk glands होते हैं. They help in attracting the female. समझ में आ गया बच्चे आपको? Yes ma'am. Everybody? Yes ma'am. Rest of them are not speaking. मैम, femoral gland जो है केवल मेल रिजल्ट पे होता है क्या? हाँ जी, हाँ बेटा. In only in male, and that is how one identifies also. Okay ma'am. ठीक है. Okay. आपकी तो अभी 1 घंटा और क्लास है ना, so can we take a break of 10 minutes and just have a glass of water and come? ठीक है? Sure ma'am. Yes ma'am.